Just imagine if the banking laws are amended overnight, how they are going to impact you and me. Why they will impact us? Because we keep our hard earned money in the banks, and if the banking laws changes, it will not only impact us, it will impact the entire economy. So today in this video, I will help you to understand the latest amendments which have been done under the Banking Laws Amendment Act 2025 and how these amendments are going to impact your deposit nominee, as well as what will be the impact of these amendments on RBI as well as the public sector banks day-to-day operations. So let's check out all the important aspects which are going to be really very important for your upcoming examination. If you want to download the PDF, it will be available on my Telegram channel. You can download it. Now the question is, Banking Law Amendment Act. It was introduced back in April 2025, and then in July 2025, the gazetted notification was out, which says that these laws will be applicable from 1st of August 2025 itself. Now the question is, what is the objective behind these amendments? So the objective behind these amendments is to modernize banking laws for improved governance, increase the transparency in the banking sector, as well as increase the investors' protection, and the regulatory efficiency should be increased over the period of time. These amendments include total of 19 amendments, and these 90 amendments have been done in the 5 acts as mentioned below. ये 5 acts कौन से हैं? We have the first one, RBI Act 1934, then we have Banking Regulation Act 1949, SBI Act 1955, and then Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 as well as 1980. तो ये कुल मिलाकर 5 एक्ट्स हैं जिनमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, और वो अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं जिनकी वजह से डे टू डे ऑपरेशंस में इंपैक्ट होगा, जिनकी वजह से आपके डिपॉजिट्स चेंज होंगे, जिनकी वजह से आपके डिपॉजिट करने के मेथड्स ओवरनाइट चेंज होंगे। उन सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद मी। एज यू ऑलवेज नो, पहले मैं पूरे का पूरा जो चेंजेस हैं उसे मैं हैंड रिटन फॉर्मेट पे आपको समझा दूंगा, एंड वंस इट इज क्लियर देन वी विल गो थ्रू विद द कंटेंट क्विकली। सबसे पहला पॉइंट, वी ऑल नो दैट आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द सीआरआर एज वेल एज एसएलआर ऑन fortnight basis, but actually earlier जो fortnight था, the definition of fortnight was actually written as second and fourth Friday of every month, या फिर RBI Act में it was written as alternate Friday। तो इस प्रॉब्लम को, इस कंफ्यूजन को अब दूर कर दिया गया by the change in definition, और I would say by the updating the definition of fortnight। अब fortnight का मतलब है महीने के पहले दिन, पहले 15 दिन, that means 1st to 15th of every month will be the first fortnight, and if you are supposed to submit the report fortnightly, then you will be submitting the report on 15th of every month, as well as the next report will be submitted on the last day of the month। और ये जो लास्ट डे है that could be 30th, that could be 31st। तो जो भी आपका लास्ट डे होगा that will be the day where you are responsible to submit the report। तो जो रिपोर्टिंग फोर्टनाइट की जाती थी, सेकेंड फोर्थ फ्राइडे बोलकर की जाती थी, ऑल्टरनेट फ्राइडेज बोलकर की जाती थी, नाउ इट विल बी डन ऑन 15th of every month as well as the last day of every month। Second point is the timeline to submit, or we call it as the submission timeline. The submission timeline for CRR was 7 days. Now this timeline of 7 days has been reduced to 5 days। Not only this, ये सिर्फ और सिर्फ fortnight के लिए changes नहीं हुए, but these changes have been updated for other reports as well। कि अगर आपकी कोई report fortnight submit होनी है, it will be submitted on 15th and last। then अगर monthly है या quarterly है, then it will be submitted on the last date of the month। अब इसमें day का जो problem था, day का जो issue था, उसे क्या कर दिया, resolve कर दिया। तो ये fortnight वाला first point है which you need to remember। और ये जो timeline थी 7 days of submitting, या submission timeline जो 7 days थी, it has been reduced to 5 days। This is the first change which you need to remember। दूसरा change जो हुआ है latest amendment में, that is related to substantial interest। Substantial interest का मतलब क्या? मान लीजिए एक इंडिविजुअल है who is the director of a bank or maybe at a very influential position in the bank। उसी बैंक के पास एक कंपनी लोन लेने आई, और उस कंपनी में इस डायरेक्टर का
इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट का मतलब द डायरेक्टर इज द इन्वेस्टर in the particular company. So in that particular case, if this company has reached the bank to borrow the funds, we will call it as what? So we will call it as borrowing company. So it has been very clearly mentioned that if a borrowing company reaches to a bank to borrow the loan in which director or any other influential personality of the bank is holding an account, then in that particular case, no lending will be done. अगर मैं general बात करूं, no lending will be done, or lending will be allowed. Lending will be allowed only if shareholding is equals to or shareholding is up to 5 lakh rupees और 10% ऑफ पेड अप कैपिटल. लेकिन ये बातें हुई थी 1968 में, इसे तो उसके बाद रिवाइज ही नहीं किया गया, लेकिन अब जाकर इसे रिवाइज कर दिया. अब ये जो 5 लाख की फिगर है, इस 5 लाख की फिगर को अब रिमूव कर दिया, या इसे कहो कि इंक्रीज कर दिया, और इसे इंक्रीज करके कर दिया अब 2 करोड़. अगर आपके डायरेक्टर का शेयर 2 करोड़ या उससे कम है, then the company has a power to borrow the funds and the borrowing will be done. Borrowing request can be raised from the company and bank is allowed to provide loan to the company only if the shareholding value is up to 2 crores, which was earlier 5 lakh rupees, which has not been received since 1968. ठीक है जी. उसके बाद अगर मैं थर्ड अमेंडमेंट की ओर बढ़ूं, आफ्टर द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, द थर्ड अमेंडमेंट is very important, that is related to the public sector banks. I'll quickly remove my image ताकि आप देख पाएं. और अगर मैं बात करूं ये थर्ड अमेंडमेंट की, तो थर्ड अमेंडमेंट है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, यानी कि जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इवन जो SBI है, these are the public sector banks, they are first registered as a company and later on they have received the title of a bank. जैसा कि RBI में लिखा है, scheduled bank is basically a bank which possess or which is a company, then it can be included under the category of scheduled bank. तो उस केस में ये कहा गया कि अगर एक बैंक है और बैंक के जितने भी unclaimed dividends है. अब unclaimed dividend क्या होता है सर? unclaimed dividend का मतलब है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, कंपनी हैज अनाउंस द डिविडेंड, और उस डिविडेंड को पे आउट करने के लिए कंपनी हैज अ विंडो ऑफ 30 डेज. उस 30 डेज में डिविडेंड को ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द शेयर होल्डर्स अकाउंट, ऑब्वियसली एज प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर होल्डिंग. लेकिन कुछ अकाउंट जहां पे ये ट्रांसफर नहीं हो पाया, या अकाउंट इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, या फिर अकाउंट अब एक्टिव नहीं है, तो उन केसेस में द शेयर होल्डर्स दे शुड रीच द कंपनी टू क्लेम देयर डिविडेंड. अगर आप 30 डेज तक क्लेम करने नहीं आए, दैट इज द पेमेंट विंडो, उसके बाद भी कंपनी विल वेट फॉर 7 डेज. अगर आप 7 डेज तक भी नहीं आए, तो दैट पर्टिकुलर डिविडेंड विल बी टर्म्ड एज अनक्लेम्ड डिविडेंड, और उस अनक्लेम्ड डिविडेंड को it will be transferred into an account which is maintained by every company. We call it as unclaimed account. Similarly, we have unclaimed shares. Similarly, we have unclaimed bonds. Unclaimed bond का मतलब कि सर बॉन्ड था 2 साल का, बॉन्ड मैच्योर हो गया, you have not even claimed the bond value, that is the face value of the bond, you have not even claimed the interest of the bond. तो उस केस में अगर कोई क्लेम नहीं होगा for 7 years, then after 7 years this amount will be transferred to IEPF. तो ये कोई नई बात नहीं है, कंपनीज तो ऑलरेडी ऐसा कर ही रही है. This is nothing new. Companies are already transferring these funds into the IEPF, that we basically call it as what, sir? It is termed as Investor Education and Protection Fund, which is managed under the Ministry of Corporate Affairs. तो उस केस में अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं या SBI है, उनकी तरफ से भी इस फंड को अब ट्रांसफर किया जाएगा किस में? इनटू द अकाउंट व्हिच वी कॉल इट एज IEPF अकाउंट. ठीक है जी. दिस इज द थर्ड अमेंडमेंट व्हिच हैज बीन डन. मूविंग ऑन टू द फोर्थ अमेंडमेंट गाइस. द फोर्थ अमेंडमेंट इज वेरी क्लोज टू यू एंड मी, दैट इज द जनरल पब्लिक. इफ यू आर होल्डिंग अ डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, और यू आर हैविंग अ सेफ locker in a bank, then in that particular case you can make the nominees कि भैया अगर मेरे बाद, if I'm not alive, then on my behalf who will be responsible to operate the account, who will be responsible to receive the assets in the safe locker.
So earlier there was a point that nominee count can be up to 1, but now this nominee count has been increased to 4. This is a new change कि भैया अब इसे 1 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 कर दिया. अब उस 4 में भी प्रॉब्लम है कि सर आप चारों को साइमल्टेनियसली नॉमिनी बनाना चाहते हैं. साइमल्टेनियस नॉमिनी का मतलब क्या हुआ सर? साइमल्टेनियस नॉमिनी का मतलब है एक इंडिविजुअल है, उसकी एक वाइफ है, वाइफ, सन एंड डॉटर. He says, my wife, my son, my daughter, they all are the simultaneous nominee of my account. I'll give 50% to my wife, 25% to my son, 25% to my daughter. So at the time of death of this particular individual, 50% can be claimed by the wife, 25% can be claimed by son, and 25% can be claimed by daughter. But the point over here is, let's suppose at the time of raising the claim when the depositor has passed away, unfortunately, if the wife has also passed away, then what will happen? So in that particular case, this 50% of the amount will be added into the total asset of this individual and it will be claimed as per the legal system or legal hire system, whatever it is going on. दूसरा है sequential. Sequential का मतलब क्या? Preferences. I give first preference to my wife. If she is not alive, then preference will be given to son. If he is not alive, unfortunately, then preference will be given to daughter. But you can choose either simultaneous or you can go for sequential. You cannot go for both. ठीक है जी. Last but not the least, in the most important amendments, we have 2 more amendments, I would say. 5th one will be auditor. So banks, that is the public sector banks, such as nationalized banks plus SBI. Now the public sector banks, they can independently appoint the auditors, as well as they can independently decide their remuneration. Earlier this remuneration was fixed by RBI, but now RBI role has been removed. अब बैंक जिसे कैपेबल समझेगा, जो बेटर होगा, उसी को ज्यादा पे करेगा. दिस इज द गिवन कंडीशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट वी हैव इज कि सर जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी टेन्योर, it can be now 10 years, which was earlier limited to 8 years. It has been increased. Plus, जो हमारे cooperative banks के directors हैं, for example, if someone is a director in, let's say, state cooperative bank, then he or she can serve as a director on the district central cooperative bank as well. वो भी alignment है. That permission is also given. That has also been introduced related to central, district cooperative bank and state cooperative bank in order to have more uniformity and more effective implementation of laws in the cooperative banks. Is this point clear, guys? So this is the entire story of your banking amendments. So if you can see, the first one, that is related to fortnight, already discussed. Submission deadline, already discussed. Moving on to the next point, 4 nominees, simultaneous, successively, already discussed. Substantial interest 5 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया, 2 करोड़. बाकी सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, PDF पढ़ लेना, कहानी समझ आ जाएगी. उसके बाद अगर हम बात करें unclaimed dividend, unclaimed shares, unclaimed bonds, they will now be transferred to IEPF as stated now by the public sector banks, which include nationalized banks as well as SBI. ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया. उसके बाद अगला जो हमारे पास पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू fix the auditor fees. Now it can be decided. Earlier it was decided by RBI, but now banks like SBI and other public sector banks, that is nationalized bank, they can fix on their own the remuneration for the auditors. ये है conclusion पूरी कहानी का. तो पूरी कहानी का conclusion ये रहा आपके सामने. जो important चीजें हैं, ये CRR से related and SLR से related fortnight वाला part और submission timeline वाला part, nominee वाला part simultaneous और successive, then 5 लाख और 10%, 2 करोड़, unclaimed dividend, unclaimed shares, unclaimed bonds. They will be transferred to IEPF after 7 years. 4-7 साल तक अगर कोई क्लेम नहीं करता तो 7 सालों के बाद इसे IEPF को ट्रांसफर कर दो. और उसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑटोनॉमी दे दी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, दे कैन इंडिपेंडेंटली फिक्स द ऑडिटर फंड्स. दिस इज क्लियर गाइस. ये इतनी स्टोरी है और इस स्टोरी से आपके हर आने वाले एग्जामिनेशन में फॉर श्योर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा. दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट. गुड लक.
Take care and don't forget to solve the questions which I will be adding in the PDF. तो PDF में मैंने 2 questions भी add किए, आप इन questions को जरूर attempt कीजिएगा and share the answers in the comment section and I will be sharing the correct answer. और याद रखना, these are the multiple choice questions. More than one question can be correct. More than one option can be correct in this given question. तो जल्दी से इन्हें solve करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. गुड लक. गॉड ब्लेस यू ऑल.